Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss first internal question paper part C. Topic is data pre-processing for feedback analytics. In previous two videos we already discussed question number 9th, question number 10th, question number 11th and question number 12th. Now we discuss question number 13. Discuss normalization method. First we have to find min-max normalization, then z-score normalization, then we find z-score normalized using mean absolute deviation or D asks for decimal scaling. So let's start one by one. First we find minimum and maximum normalization. So first we understand what is normalization. So we use normalization to scale numerical attributes to a common range. So the large number don't dominate a small number like age during distance calculation. Example click KNN, K nearest neighbor. So first we find minimum maximum normalization. तो इसमें हमारा जो गोल होता है वो होता है स्केल डाटा लीनियरली टू अ फिक्स रेंज यूजुअली 0 to 1। इसका फॉर्मूला रहता है मिनिमम मैक्सिमम का v नॉट इक्वल टू v माइनस मिनिमम ए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ए माइनस मिनिमम ए ब्रैकेट न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम प्लस न्यू मिनिमम। इसके प्रोस क्या होता है, ये क्या कहता है, प्रिजर्व द रिलेशनशिप एग्जैक्टली। और इसके कुछ कॉन्स होते हैं जैसे कि वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर मींस 1 मिलियनर रूइन द सैलरी स्केल फॉर एवरी वन मींस ये हमारा प्राइम एग्जांपल है हमारे देश इंडिया जीडीपी मींस वी हैव अ ट्रिलियन जीडीपी बट आवर पर कैपिटल इनकम इज स्टिल वेरी लो बिकॉज ओनली 1% हैव अ हाईली मनी। तो हम इस एग्जांपल समझ सकते हैं। देन वी फाइंड जेट स्कोर नॉर्मलाइजेशन जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। इसका जो मेन गोल होता है वो होता है स्केल डाटा सो दैट मीन नॉट इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1। तो इसका फॉर्मूला होगा जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन माइनस म्यू ऑफ मीडियम ऑफ ए अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए के। इसका प्रो हमें इसके प्रॉफिट ये रहता है कि हैंडल आउटलायर मच बेटर देन मिनिमम मैक्स और गुड व्हेन यू डोंट नो द एक्चुअल मिन मैक्स ऑफ द पॉपुलेशन। Now we move to the next, Z square using mean absolute deviation. So what is, first we understand what is Z square using mean absolute deviation and its goal. So its goal is an even more robust version of Z score for data with extreme outlier. इसका फॉर्मूला रहेगा Z square using mean absolute deviation equal to normalization minus mean A standard mean A divided by standard deviation upon A where ऐसे is the mean absolute deviation। इसके प्रोस क्या होंगे, reduce the impact of outlier even more than standard j square। Now we have to find decimal scaling। So main goal is decimal scaling is move the decimal point of value of attribute a। इसका फॉर्मूला होगा v नॉट इक्वल टू v अपॉन 10 की पावर j where जो j is the smallest integer that is max v not less than 1। Example, if value range from -986 to 912, divide everything by 1000, j equal to 3, 986 becomes 0.986। So this is the solution of min-max normalization, z-score normalization. Z-score using mean absolute deviation and decimal scaling. I hope you understand. Now we move to the next question, 14th. So question number 14 say normalize the following faculty workload value hour per semester 2000 200 300 400 600 1000 using a minus d। So first we make data hour per semester, so we make it 200 300 400 600। now we first step में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेसिक स्टेट जैसे कि मिनिमम वैल्यू है 200 मैक्सिमम वैल्यू है 1000, then we have to find mean value। So first we all add them and divided by 5, so आंसर mean आएगा हमारा 500। then we find standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन हम डायरेक्ट करके बता देते हैं, डायरेक्ट अप्रॉक्स आएगा 316 डिवाइड बाय डॉट 2, ये हमारा होगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। then we find mean absolute deviation। for mean absolute deviation differ from mean मतलब हमें 500 से माइनस करना पड़ेगा सारी वैल्यूज को। तो -300 -200 -100 100 in mode value। देन सम ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो 300 प्लस 200 100 100 प्लस 500 तो आएगा 1200। तो हमारा मीन डिफरेंस आएगा 214। देन वी फाइंड मिनिमम मैक्स नॉर्मलाइजेशन रेंज 0 से 1। so we already know the formula of minimum max normalization।
Then we use formula minimum max normalization equal to v minus minimum value and divided by maximum value minus minimum value. फर्स्ट वी फाइंड डिनोमिनेटर तो 100 माइनस 200 कर देंगे कि हमारी जो बी मैक्स की वैल्यू है वो 1000 है और मिनिमम वैल्यू है 200. देन वी फॉर 200 फिर हम 200 के लिए देखेंगे तो 200 माइनस 200 सो 0. देन 300 के लिए 0.125. देन 400 के लिए 0.25. देन 600 के लिए आंसर है 0.50 and 1000 के लिए आएगा 1.0. So this is the min max normalization. Then we use find z square normalization. So we all know what is z square normalization formula. So z square normalization equal to v minus mu upon lambda. तो इसमें फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो इसमें 200 की वैल्यू आएगी -0.95, 300 की वैल्यू आएगी -0.63, 400 की वैल्यू आएगी -0.32, 600 की वैल्यू आएगी 0.32 और 1000 की आएगी 1.58. देन वी फाइंड जेड स्क्वायर यूजिंग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. तो फॉर्मूला इज जेड स्क्वायर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इक्वल टू v माइनस म्यू अपॉन मिनिमम एमएडी. फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यूज तो 200 की आएगी -1.5 और 600 की आएगी 0.42. सिमिलर फॉर अदर्स. देन वी फाइंड decimal scaling. Now we put decimal scaling formula, then use decimal, or then we find it all values. So I hope you guys understand question number 14 very well. Thank you very much.